Hello students, how are you? So today we are going to start the sixth chapter of the honeydew, that is this is Zoddy's fawn. Okay, so let's start the chapter now. This is a story. The story begins with there is a boy named Zodys. Okay, so Zoddy's father is bitten by a poisonous snake. Okay, and his life is 3/8 is on the stage of 3/8. So they use the heart and liver of a doe means a female deer. Okay, so they use the heart and liver of the female deer in order to draw out the poison from Jodie's father's body. Okay, so now Jody is worried about the fawn, that what will happen to that little fawn left without a mother. Fawn means the young one of the deer. Okay, so now let's start the chapter from here. So first para is before you read. Okay, we will go through that before you read. Okay, so often instead of rushing to the doctor to treat a small cut and burn, we find quick and effective cures cures during things available at home. Can you think of some such remedies for that? Okay, so what happened that generally when we have some small wounds and all, so we use the homemade remedies instead of going to the doctor. Like a cut on your knee, if your knee is cut, so what we use, like a first aid kit like betadine and all we use on that, on antiseptic cream. Okay, we use the antiseptic cream on that. Or burn on your arm, so we use the antiseptic cream. Okay, we don't prefer to go to the doctor. A being sting, okay, so if a being sting, sometimes we use some bases and all, okay, to neutralize the acid released by the bee. So we don't prefer to go to the doctor for small cuts and wounds and all. Okay, so in this story, Jodie's father had been beaten. In this story, Jodie's father had been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out of the poison. Jodie wonders what happened to the little fall without the mother. So it's saying that Jodie's father was being bitten by the rattlesnake, and they used, maybe I don't know how the liver and heart of the doe is used to draw out the poison. Okay, but actually they used the liver and heart of the female deer. Okay, so in order to draw out the poison, okay, released by the rattlesnake. Okay, now Zodis is thinking, he's worried about the fawn. Fawn means the young one of the female deer. That what happens to that young one? They have left him without a mother. Okay, that is being orphaned now. So he is worried about that fawn. So Jodis allowed his thought to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father beside. Okay, Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Papa?" "Just fine, son. Old death has none thieving elsewhere, but isn't it close shave?" "I agree." Penny said, "I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed." Okay, so what happened is that the boy, that is Jodis, he allowed his thought to drift back. It means he was thinking about the fawn that they left back. Okay, he couldn't keep it out of his mind. He tried to
uh, divert his mind, okay, but he couldn't. He was forced to think about that fawn, okay, what will be the what will be happened with that fawn, okay. So he had held it in his dreams in his arms. Means he every time, when they were killing the doe and also he was having that fawn in his arm, okay. He slipped from the table and went to his father's beside, and ultimately he decided to go to his father. He was living in another room, okay. So he went to him and he sat beside him and said, Penny, his father's name is Penny, okay. He was laying at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Here the dilated means the expanded or enlarged, okay. Jody said, "How are you feeling, Pa?" And he asked about his pa, that how was his condition now. Okay, just fine, son. Old death has gone, saving answer, but wasn't it closed ever? He is saying that okay, now I'm fine, and the death has gone to somewhere else. Okay, to steal the soul of someone else. It means he is away now. He is safe from the death. Okay, Penny said, I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what you needed. Means it means ki how the boy, it means he was small, still was performing well. Okay, how he has accepted his responsibilities. He performed about his responsibilities. He was brave and all. So because of all these things, Penny said that I'm proud of you, okay. So pa, yes son, he asked. Jody asked to his father now. Pa, father said, yes son. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फॉन कह रहा है कि क्या आपको वो फॉन और वो हिरनी याद है, ठीक है. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. नाउ फादर इज सेइंग आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन. निश्चित रूप से जो पुअर डो है उसी ने मुझे बचाया है. डो मीन्स दैट हिरनी, ओके. हिरनी ने ही मुझे बताया, मैं बचाया है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ. पा, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. Now the boy is saying his father कि पा, जो जिस बच्चे को हम, जो मेमने को हमने छोड़ दिया था, वो अभी भी वहाँ है. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड. वो बहुत भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा. आई सपोज सो. फादर से क्या, या मुझे भी लगता है कि वो भूखा होगा, डरा होगा. Pa, I am a big boy. I don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it there and raise it? So now he's asking for the permission to his father that Pa, अब मैं बड़ा हो गया हूँ. आई एम अ बिग बॉय नाउ. अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ. आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन. अब क्यों नहीं मैं उस फॉन को ढूंढ लेता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए और मैं उसे यहाँ ले आऊँ और इसे यहाँ बड़ा किया जाए. ओके. सो पेनीज लेज क्वाइट. Penny lay quiet, staring at the ceiling. Why, you have got me hemmed in. और पेनी जो है वो छत की तरफ देखते हैं एंड देन सेड कि बेटा, तुमने तो मुझे डेलिमा में डाल दिया. हेम्ड मीन्स तुमने तो मुझे घेर दिया है, ठीक है, घेरा डाल दिया. मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं. मैं तुम्हें मना करूं या हाँ बोलूं. इट वोंट टेक मच टू रेज इट. पा, आई इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड it will soon start eating leaves and acorns. Okay, so father is asking कि it won't take much to raise. क्या इसका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको बड़ा होने में. तो Jody is saying पा, it will soon start eating leaves and acorns. ठीक है, वो बहुत जल्दी पत्तियाँ और घास फूस और acorns मीन्स ब्राउन नट्स, ठीक है, वो सब खाना वो शुरू कर देगा. देन मुझे मिल्क पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ ही टाइम की बात है जब मुझे दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज. नाउ द फादर सेइंग कि अपने उम्र के हिसाब से तुम ज़्यादा तेज हो, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत स्मार्ट हो. वी टुक its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day.
एंड नाउ द फादर इज सेइंग कि आप तुमने तो मुझे डेलिमा में डाल दिया, मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, ठीक है, लेकिन क्या उसे बहुत टाइम नहीं लगेगा बड़े होने में? तो जॉडी कहता है कि नहीं, वो जल्दी ही पत्तियाँ, घास वगैरह, घास फूस खाना शुरू कर देगा, तो फिर उसे दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिताजी उसके बोलते हैं कि नाउ यू आर स्मार्टर देन अदर बॉयज ऑफ योर एज, अपने उम्र के कंपैरिजन में तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। ओके, हमने उसके माँ को यूज़ किया था, वी टूक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, ठीक है, ये हमने ही उसकी माँ को मारा था। सो इट सीम्ड अनग्रेसफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और ये बहुत ही दुखदाई होगा उसको, अनग्रेसफुल होगा उसको, ठीक है, कि वहाँ उसको भूखा रहने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाए। देन ही से कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं नहीं कह सकता, आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे, और जो मेरी कंडीशन थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शायद अगला दिन देखने के लिए जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बट इट वॉज ऑल क्रेडिट गोज टू दैट डो हु सेव्ड हिज लाइफ, ठीक है, आखिर उसी हिरनी की वजह से ही वो जिंदा है, वो अगला दिन देख पा रहा है। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हीट एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? तो बच्चा पूछता है कि क्या मैं मिल व्हील के पीछे, एक हॉर्स राइडर है, ठीक है, घुड़सवार है, क्या उसके वहाँ बोलता है क्या मैं उसके पीठ के ऊपर पीछे बैठ करके और उसे ढूंढने जा सकता हूँ? सो द फादर इज सेइंग, टेल योर टेल योर माँ, tell your ma I said you can go. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring a coffee for everyone. He said, Ma, Pa says I can go bring back the fawn. She held the coffee pot in midair. What fawn? Okay, so he goes to his mother and he tells her that Ma, Papa has allowed me to bring the fawn back. So may I go to bring the fawn back? And now mother is scared. What fawn? He is surprised कि कौन सा fawn? किस fawn की बात कर रहे हो? The fawn belonging to the doe we killed. And now the boy is explaining कि that fawn, वो बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया है, वो हिरनी जिसको हमने मार दिया है, we used the doe's liver to draw out the poison and says पा, ठीक है, तो उसने कहा कि वो हिरनी जिसको हमने मार करके और उसका लीवर यूज किया था पा को बचाने के लिए। वेल फॉर पिटी से पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और कहता है कि पा कह रहे हैं, मीन्स पापा कह रहे हैं कि उसे इस तरीके से छोड़ना क्या होगा, अन्याय होगा, ठीक नहीं है। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड केम क्वाइट फ्री, द बॉयज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। तो उसकी एक मेड या जो भी थी, ठीक है, डॉक विल्सन नाम की एक महिला थी, जो कहती हैं कि यस दिस इज राइट मैम, इस दुनिया में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, हर चीज़ का मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। तो बच्चे का कहना सही है और इसके डैडी का भी कहना क्या है, सही है। सो ही शी कन्विंस्ड हिज मदर फाइनली, ठीक है, तो डॉक विल्सन जो थी फाइनली जॉडीज के मदर को कन्विंस कर लेती हैं कि ठीक ही कह रहे हैं दोनों। Millville said, he can ride back with me. I'll help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you give it your milk, we have got nothing else to feed it. Millville said, come on, boy, we got to riding. Ma Buxter asked anxiously, you will not be gone long. Zoddy said, I'll be back before dinner for sure. Millville mounted his horse and pulled Joddy up behind him. He said to Millville, do you think the fawn's still there? Will you help me find out? Okay, now come here. The Millville said कि he can ride me with me, ठीक है, वो मेरे साथ राइड कर सकता है। इट मीन्स आई एम रेडी टू ब्रिंग हिम टू टेक हिम टू द फॉन, मैं उसकी फॉन ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, और ही कैन फाइंड इट, वो उसको ढूंढ सकता है। उसके बाद उसकी माँ भी कन्विंस हो गई। देन शी सेज कि ओके इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, ठीक है ले आओ, लेकिन उसे तुम्हारा अपना मिल्क देना पड़ेगा, अपने हिस्से का मिल्क तुम्हें उसे देना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास कुछ नहीं है उसको खिलाने के लिए, उसे फीड कराने के लिए। सो मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट गेट राइटिंग, ठीक है आजा बेटे हम चलते हैं। माँ बक्स्टर आज एंग्सियसली यू विल नॉट गॉन लॉन्ग, कहती है कि तुम बहुत दूर नहीं जाना, ठीक है, एज यूजल
वाइल गोइंग आउट फ्रॉम द हाउस मदर से कि देर मत करना, घर जल्दी आ जाना, या फिर दूर तक मत जाना, लाइक दैट। तो ऐसे उसकी मामी बोलती है। हर नेम इज बक्स्टर, ही सेड शी सेड कि ज़्यादा दूर मत जाना। जॉडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, और जॉडी प्रॉमिस करता है कि मैं डिनर के पहले तक वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। माउंटेड मीन्स गो अप, ठीक है, उसके पीठ पे बैठ जाता है मिलविल एंड पुल जॉडीज अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जॉडीज को बैठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड आउट। एंड नाउ जॉडी इज एंग्जियस एंड ही इज नर्वस एंड आस्किंग टू मिलविल। मिलविल से पूछता है कि क्या फॉन अभी भी वहां पे होगा, और क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे फाइंड आउट करने में, उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाउ, we will find him if he is alive. How do you know it's a he? The spots were all in line on a doe fawn. Past said the spots are every which way. कहता है कि हम उसे निश्चित रूप से हम इसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा है तो। हाउ डू यू नो इट्स अ ही? तुम उसे कैसे पहचानोगे कि ये वही फॉन है, ठीक है। द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, कहता है कि उसके पास जो स्पॉट्स थे वो सारे एक लाइन में थे, उसकी एक पहचान थी, ठीक है। ऑन ए डॉ फॉन, जो डो का फॉन था उसके लाइन उसके बॉडी पे एक लाइन में स्पॉट्स थे, ठीक है। पास से द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, ठीक है, और उसके पास उसको समझाए रहते हैं कि ये इस टाइप का होगा तो ये फॉन है, ठीक है। जॉडीज गेव हिम, so now the part second is there. Jodis gave himself over to the thought of the fawn. They passed the abandoned clearing, ठीक है। जॉडीज गिव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट ऑफ द फॉन, और जॉडीज जो है वो खो जाता है उसी फॉन के बारे में सोचना है, और उसमें उसके सोच में वो खो जाता है। दे पास द abandoned क्लियरिंग, और वो जो abandoned मीन्स जो डिजर्टेड हो गया होता है, अब बिल्कुल घास फूस जैसा होता है, ठीक है, झाड़ियों जैसे, उसमें वो निकल लेते हैं उसको ढूंढने के लिए। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।